हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेरिश टू लर्न। आज आम पढ़ा कम्प्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ ओपीएससी ओमास पीवाईक्यू 2019 जीएस1 2019 रो ओमास पीवाईक्यू आम पढ़ा 2019 रही जनरल स्टडी 1। सो वे स्टार्ट करवा क्लास with which amendment of Indian Constitution Goods and Service Act is associated with. Goods and Service Act GST is associated with which amendment? The answer is 101. 101st 101 amendment. GST Good and Service Act. GST Act is associated with 101 Constitutional Amendment of 2016. तो फास्ट जीएसटी एक्ट कौन देखिए तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 122 अमेंडमेंट बिल 122 नंबर अमेंडमेंट बिल रे हितला एटा and was introduced in the parliament by Rajya Sabha on 3rd August 2016 and Lok Sabha रे हितला 8 August 2016 हितला। तो the constitutional amendment bill was passed in 15 state रे हितला first 15 state रहितला। thereafter honorable president gave assent the constitution amendment act CAB 2016 on 8 September 2016 रे 101st amendment रे हितला 101 amendment रे हितला। तो 122 नंबर amendment bill थिला एटा। तो जीएसटी हमर केबे हला आर्टिकल 279 ए आर्टिकल 279 ए talks about GST Act और GST काउंसिल जोड़ा हितला GST काउंसिल भी क्रिएट कराइतला GST काउंसिल सेटा हला आर्टिकल 279A1 GST काउंसिल क्रिएट कराइतला। तो हमें एटू जानले कोन ना GST हितला 101st अमेंडमेंट एक्ट रे हितला। तो 122 अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थिला 122 नंबर बिल थिला किंतु 101 अमेंडमेंट थिला 2016 रे हितला अमेंडमेंट एक्ट। देन देखबा आर्टिकल 279 अंडर रे एसोसिएटेड। देन एनाकोंडा 16 ऑर्गेनाइज्ड बाय पोलैंड इज ए एनाकोंडा 16 गोटे हितला मिलिटरी एक्सरसाइज हितला नाटो नेशन मानको भीतर गोटे हितला नाटो नेशन को भीतर between NATO countries NATO nations between NATO nation मानक भीतर हितला। तो नाटो देखिए कोन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन गोटे हितला नाटो हितला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हितला गोटे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए प्लस कनाडा देन बाकी जो गुना रहिले सेटा यूरोपियन नेशन गुडा रहितले नाटो रो। तो यार हेडक्वार्टर हैला ब्रसेल्स बेल्जियम रहउची ब्रसेल्स हेडक्वार्टर नाटो हेडक्वार्टर। देन असला हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया। तो चेयरपर्सन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंटरस्टेट काउंसिल क्यों ना इंटरस्टेट काउंसिल कोन आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल रे के मेंबर रहबे मेंबर्स के रहले प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन रहिले। तापरे तो यूनियन मिनिस्टर रहे 10 जन यूनियन मिनिस्टर 6 जन होजन कंपलसरी आ 4 जन रहिले इनवाइट स्पेशल इनवाइट रहिले टोटल 10 जन रहिले किंतु 6 जन कंपलसरी रहया दरकार। तो 6 यूनियन मिनिस्टर एज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर 6 यूनियन मिनिस्टर रहिबे। तापरे चीफ मिनिस्टर सीएम ऑफ ऑल स्टेट and UTs with legislature CM of all state and UTs then
6 permanent member ମଧ୍ୟ ରହିବେ। 6 permanent member also ରହିବେ। then ଦେଖିବା International Day of Elimination of Violence Against Women is held on 25th November. International Day for Elimination of Violence Against Women is held on or celebrated on 25th November. Each year 25th November. Then national 1st December. 1st December is celebrated as World AIDS Day. AIDS Day. AIDS Day. World AIDS Day is on AIDS Day. 1st December is celebrated as AIDS Day. And 18th December is celebrated as International Migrants Day. 18th December is celebrated as International Migrants Day. Migrants Day. Then 31st December. 31st December. So for 25th November is celebrated as Elimination of Violence Against Women, and 1st December is celebrated as AIDS Day, International AIDS Day, and 18th December is celebrated as International Migrants Day. Then the author of the coalition years from 1996 to 2012 is Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee is the author of the coalition year from 1996 to 2012. Pranab Mukherjee, former president of India, former president, finance minister. Pranab Mukherjee written the book The Coalition Years of 1996 to 2012. Then where is the headquarters of UNESCO? UNESCO headquarters is in Paris, France. UNESCO headquarters is in Paris, France. So Geneva कार हेडक्वार्टर रहिला जेनेवा रे WHO रो हेडक्वार्टर हैला जेनेवा WHO लंडन हैला IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है लंडन रोम हैला फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रोम पेरिस हैला यूनेस्को हेडक्वार्टर हैला पेरिस Then identify the odd one. ICJ, ECOSOC, WHO, UNSC. तो identify the odd one. तो जो बाकी तीनटा जो माने रहिले except WHO बाकी जो गुडा रहिले से माने हले principal agency of United Nations. तो WHO टा होची कोन गोटा specialized agency of United Nations. WHO हैला कोन ना specialized agency of United Nations. तो यूएन रो जो रहिले प्रिंसिपल एजेंसी जो माने रहिले से माने के रहिले ओटेला उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गोटे उंगा देन आसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी गोटे रहिला देन आसला यूनाइटेड नेशन इकोसॉक इकोनॉमिक एंड इकोसॉक रहिला सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल गोटे रहिला इकोनॉमिक एंड सोशियल काउंसिल तार बडला यूएन रो ट्रस्टीशिप काउंसिल रहला जोटा कि एबे आ नाही एबे ट्रस्टीशिप डिसफंक्शन हो जाई ट्रस्टीशिप काउंसिल देन रहला आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे देन रहला यूएन सेक्रेटेरिएट तो WHO होजी कोन गोटे स्पेशलाइज्ड एजेंसी किंतु ए जो रहला छटा रहले एमान होचंदी गोटे गोटे प्रिंसिपल एजेंसी तो यार सब गुडार हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क रे एक्सेप्ट द हेग एक्सेप्ट द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे रे हेडक्वार्टर हैला द हेग नेदरलैंड द हेग देन देखिए पिक द ऑड वन जेनेवा ओटावा कैनबेरा एंड मैड्रिड तो ऑड वन इज जेनेवा Pick the odd one. The odd one is Geneva.
So Geneva is the answer because all other are capitals. All other are capitals, but Geneva is not the capital of any country. The Ottawa is the capital of Canada. Ottawa is the capital of Canada, and Canberra is the capital of Australia. Canberra is the capital of Australia. Madrid is the capital of Spain. But Geneva is not the capital of any country. So Geneva is a city in Switzerland, and Switzerland the capital is Switzerland, a city in Switzerland. So Switzerland ರ capital ಎಲ್ಲ Bern. Capital of Switzerland is Bern. So that's why Geneva is differ from other or odd one. Geneva is odd one. Then to monitor universal household electrification, which web portal is launched? So to monitor the universal household electrification, which web portal is launched? The answer is Saubhagya portal. Saubhagya portal is launched to monitor the household electrification, to capture the information and progress of home household electrification. So that's why Saubhagya portal is launched. Which day is celebrated as Constitution Day in India? The Constitution Day is 26 November. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा जाइतला 26 नवंबर रे, तो दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. तो 26 जनवरी समस्त जानछन, 15 अगस्त जानछन, तो 9th डिसेंबर हैला कोन ना एंटी करप्शन डे. 9th डिसेंबर इज सेलिब्रेटेड एज एंटी करप्शन डे. एंटी करप्शन डे. 9 December is celebrated as anti-corruption day. Then next is Rakhine State is in Myanmar. Rakhine State is in Myanmar. समस्त जानते ये रोहिंग्या क्राइसिस होता, रोहिंग्या जेनोसाइड जब कहती, रोहिंग्या क्राइसिस. रोहिंग्या कौन है? जड़े मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी रोहिंग्या माने बिलोंग करछन्ती, तो सेमान को ऊपर अटैक करा जाइतला एठी. तो म्यांमार रो रखाइन स्टेट रे अटैक करा जाइतला रोहिंग्या माने, जोटी की सेमान होचन्ती नेटिव. तो सेमान को ऊपर अटैक करा जाइतला जो माने कि एबे कोडी अछन शरणार्थी ना इंडिया एंड बांग्लादेश रो. बांग्लादेश रे पूर स्टेट रे अछती ना, बांग्लादेश रे कोडी जाय अछती भाषणचर आइलैंड. भाषणचर आइलैंड सेमान को रखा जाय छि. भाषणचर आइलैंड रे रिहैबिलिटेट करा जाय छि बांग्लादेश रो. मेजरली बांग्लादेश रे अछती और सब इंडिया रे मध्ये अछती. Then asla Manushi Chiller is the Miss World 2017. Manushi Chiller 2017 रे Miss World हेतले, इंडिया को रिप्रेजेंट करथले, से इंडिया को रिप्रेजेंट करथले Miss World 2017 and she is the winner. She is the winner of Miss World 2017. ताका पूर्वरु के लारा दत्ता आउ सुष्मिता सेन ऑलरेडी विनर, ऑलरेडी जीतिले. फास्ट जीतिले सुष्मिता सेन. तो मिस वर्ल्ड पूर्व के हेतले सुष्मिता सेन हेतले. देन लारा दत्ता भी हेतले. लारा दत्ता एंड सुष्मिता सेन बिफोर मानुषी छिल्लर. देन असला बिलो आर गिवन हेडक्वार्टर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. तो आइडेंटिफाई द ब्रिक्स बैंक संघाई, आईकाओ होजी मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल, यूनिसेफ रोम, डब्ल्यूएचओ लंडन. तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर देछि, तो बोथ दीटा जाक रॉन्ग हबो. यूनिसेफ रो रोम नुहे, डब्ल्यूएचओ रो लंडन भी नुहे. तो द आंसर हबो कोन? सी एंड डी बोथ हबो. तो बोथ आर इनकरेक्ट. तो यूनिसेफ रो हेडक्वार्टर हैला न्यूयॉर्क. यूनिसेफ हेडक्वार्टर हैला न्यूयॉर्क. और डब्ल्यूएचओ रो हेडक्वार्टर हैला जेनेवा. डब्ल्यूएचओ रो हेडक्वार्टर हैला जेनेवा. तो आईकाओ हैला इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर हैला मॉन्ट्रियल कनाडा रे. एंड संघाई ब्रिक्स बैंक जोटा होची न्यू डेवलपमेंट बैंक. न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर हैला संघाई एनडीबी.
United Nation Day is celebrated on 24th October. United Nation Day is celebrated on 24th October because United Nation is established on 24th October 1945 by 44 nation in New York. तो यूनाइटेड नेशंस केबे एस्टैब्लिश हेतला ना 1945 रे न्यूयॉर्क शहर रे हेतला 44 टा कंट्री माने मिलित भाबे याकू गठन करथिले 1945 रे टू अवॉइड अनदर वर्ल्ड वार. तो वर्ल्ड वार 2 परे एटा क्रिएट हेतला. तो बिफोर यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन क्रिएटेड. लीग ऑफ नेशन वुड्रो विल्सन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आल्सो द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ताको उद्यम रे लीग ऑफ नेशन हेतला किंतु जोटा की फेल्युअर थिला गोटे वर्ल्ड वार को अवॉइड करिया पे सेति पई कोन हला ना सेकंड वर्ल्ड वार हेतला 1939 रु 1945 रे. आ 1919 रे लीग ऑफ नेशन क्रिएट कराइतला. तो फेल्युअर हैला तापर कोन करा गेला ना आफ्टर वर्ल्ड वार 2 1945 रे यूनाइटेड नेशन क्रिएट करा गेला 1945 October 24 in New York. So next question is the earliest holy books of the Hindus is the earliest holy book of the Hindus is the Veda. Earliest holy book of Hindus is the Veda. तो वेद कोन प्रथमे याकू कोन श्रुति कहते सुनी कि लोग माने मन रखले परे कोन करा गेला ना याकू रिटिन करा गेला. तो बाकी रहिला गीता रामायण महाभारत परे आसला सब रामायण वाल्मीकि लिखले. तो Mohenjo-daro is situated in the district of Larkana. Larkana in the Pakistan. Larkana in Pakistan. तो Mohenjo-daro वर्तमान पाकिस्तान रे ही अछि. हरप्पा एंड Mohenjo-daro both are in Pakistan. So recently flooding हेतला जोटा पाकिस्तान रे बहुत अफेक्ट करछि Mohenjo-daro ऊपर. तो नेम ऑफ इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर को अपोज की करथिले पुरु अपोज करथिले पोरुस जा कोंती. अलेक्जेंडर इज अपोज्ड बाय पोरुस. देन आसिला चंद्रगुप्त मौर्य ब्रेथ हिज लास्ट एट सर्वबेलानगोला. सर्वबेलानगोला रे चंद्रगुप्त तांकर शेष निश्वास त्याग करथिले. सर्वबेलानगोला in Karnataka. Then the title Napoleon of India is usually given to Samudragupta. The Napoleon of India is given to Samudragupta. तो आगे समुद्रगुप्त जन्म हेतले किंतु नेपोलियन बहुत परे जन्म हेले किंतु तांको कहै छै नेपोलियन ऑफ इंडिया. एक्चुअली समुद्रगुप्त होछथि समुद्रगुप्त बहुत पुराना किंतु तांको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहै छै. तो नेपोलियन को कहै कथा समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस कहै कथा किंतु कहै जाय कोन ना नेपोलियन ऑफ इंडिया होछन समुद्रगुप्त. तो हर्षवर्धन was defeated by Pulakseni II. हर्षवर्धन was defeated by Pulakseni II. Then as Prophet Muhammad, the founder of Islam, born in 570 किते 571 AD लिखा जाउछ. तो एटा 571 AD हो. 571 AD रे जन्म ग्रहण करथिले प्रॉफेट मोहम्मद. तो से जन्म ग्रहण करथिले कोठी ना बर्न थिला तांकर मक्का रे. मक्का इन सऊदी अरेबिया. तो बर्न करथिले मक्का रे एंड डाइड इन मदीना. मक्का एंड मदीना. तो बर्न करथिले मक्का रे एंड डाइड करथिले मदीना रे. मदीना रे केबे करथिले 632 एडी रे मरिथिले. से 632 एडी रे तांकर डेथ हेतिला. 632 एडी रे मदीना रे डेथ हेतिला जोटा कि कोन टू ऑफ द मोस्ट सैक्रेड प्लेस फॉर मुस्लिम्स और इस्लामिज्म. तो मक्का एंड मदीना कोनदी हज यात्रा कोने हज ट्रैवल करनी सऊदी अरेबिया रे दीटा जाको होली प्लेस.
two of the holiest place in the world for the Islamic religion. One is Mecca and Medina, where Mecca, the Prophet Muhammad born in Mecca, and Medina is where Prophet Muhammad died in Medina. Two of the holiest place for Islam. Then Devala Devi was married to the Alauddin's eldest son. Devala Devi married to Khirj Khan, Alauddin's eldest son, Khirj Khan. So ଦେବାଲା ଦେବୀ କୋଉଠୁ ଥିଲେ ନା ଦେବାଲା ଦେବୀ ଗୁଜରାଟରୁ ଥିଲେ, ବାଘେଲା ଡିନାଷ୍ଟିରୁ ଥିଲେ। ଦେବାଲା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ବାଘେଲା ଡିନାଷ୍ଟି ଗୁଜରାଟ ଥିଲା। ଡଟର ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଟୁଆଇ, ଡଟର ଅଫ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଟୁଆଇ ହଉଛନ୍ତି ଦେବାଲା ଦେବୀ, ଯିଏ କି କଣ ନା ଖିଲଜ ଖାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ଥିଲେ। Then who invited Babur to India? So Babur was invited by दौलत खान in 1524। दौलत खान लोधी कौन करते ना बाबर को इनवाइट करते 1524 रे 1524 and has attacked Lahore। फर्स्ट लाहौर ही अटैक करते बाबर। नेम द चीफ कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर डिक्लाइन होवार मेन कॉज ला कोन ना फैनेटिसिज्म ऑफ औरंगजेब, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब and all of these the answer is all are correct। सो औरंगजेब कौन थिला ना इंटॉलरेंस एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर रिलीजन भी थिला। देन तांकर परे औरंगजेब को परे जो माने आसले से माने बहुत वीक सक्सेसर थिले। तां डेक्कन पॉलिसी भी बहुत खराब थिला एंड फैनेटिसिज्म ऑफ औरंगजेब। Then the last great Peshwa who ruled from 1761 to 1772 AD। तो 1761 ରୁ 1772 AD पर्यंत किए पेशवा थिले ना माधव राव थिले पेशवा। माधव राव ए टाइम रे बक्सर बैटल ऑफ बक्सर भी हितला। तो 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर मध्ये ए टाइम रे हितला। The permanent settlement was introduced in India by Lord Cornwallis। Lord Cornwallis introduced permanent settlement in India। Lord Minto followed the policy of both non-intervention and intervention। Lord Minto who united the Sikhs into one compact in spite of their 12 measles। तो सिख मानू किए यूनाइट करथिले तो रणजीत सिंह हबो, पंजाब केसरी रणजीत सिंह who united the Sikhs into one compact and in spite of their 12 measles। The answer is Ranjit Singh। The black color of Regur soil is due to the presence of both of titaniferous magnetite and organic matter। तो Regur soil रे both titaniferous magnetite है and organic matter। The answer is C and D। Then asla Baridwab। Baridwab occur between the rivers of Ravi and Beas। तो बारी अछि माने कोन ना बेयास एंड रवि, तार नेमिंग रो ही दोआ गुडा हिची। बारी दोआ वेला कोन ना बेयास एंड रवि। तो एबला पंजाब रे कोन पांचटी दोआ अछि। गोटेला सिंध सागर गोटे अछि, सिंध सागर दोआ गोटे अछि जोटा कि का भीतर अछि ना इंडस एंड झेलम।
सिन सागर जोटा अछि आ गोटे अछि चाज दोआब गोटे अछि तो नेमिंग रु जणा पडुची चाज दोआब का भितर हेतु चेनाब एंड झेलम देन गोटे अछि रचना दोआब गोटे अछि रचना दोआब गोटे अछि तो एटा भी नेमिंग रु जणा पडुची रबी आउ चेनाब भितर हेतिबो रबी एंड चेनाब देन अछि बेस्ट दोआब का भितर हेतिबो ना बेयास एंड सतलेज देन तो पांचटा दोआब होइगला बारी सिनसागर चाच रचना एंड बेस्ट दोआब then the Himalaya was originated during tertiary period तो हिमालय होची कोन गोटे फोल्ड माउंटेन यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन originated during tertiary period the mesosphere of the atmosphere occurs between stratosphere and exosphere troposphere stratosphere then asla kono na mesosphere then exosphere और ionosphere भी जदि include करिवे ionosphere रहइबो तापरे आसी जीवो कोन mesosphere and exosphere sorry the Labrador current flows along the western coast of Greenland. Labrador current flows along the western coast of Greenland. So it is a cold current of Labrador current. The Lucknow town is situated on the bank of river Gomti. Lucknow city situated on the bank of Gomti river in Uttar Pradesh. Then the largest river of South India is Godavari. Largest river of South India is Godavari. जोड़ा कहते हैं दक्षिण भारत गंगा दक्षिण भारत गंगा दक्षिण भारत गंगा दक्षिण भारत गंगा का कहते गोदावरी रिवर को कहते the highest peak of western ghat is Annaimudi highest peak of western ghat is Annaimudi Annaimudi is the highest peak of western ghat in Kerala in the state of Kerala Annaimudi is in the state of Kerala तो दोड़ा बेटा कौन हला ना हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज दोड़ा बेटा देन कालासुबाई कौन हला ना कालासुबाई होची महाराष्ट्र so Kalasubai peak is in Maharashtra in the Ahmednagar district Kalasubai peak mountain peak and Mahabaleshwar is a hill station in Maharashtra hill station in Maharashtra तो Mahabaleshwar है hill station in Maharashtra Kalasubai is the highest point in the Ahmednagar district of Maharashtra or is situated in Maharashtra and Annaimudi is the highest peak of Western Ghat in Kerala and Dodabetta is the highest peak of Nilgiri. Then asila
The angle of elevation of sun on 21st March at mid-noon is the angle of elevation of sun on 21st March at mid-noon is 90 degree. Then coal of Damodar Valley region is associated with coal in Damodar Valley region is associated with Gondwana formation. दामोदर भैली रे जो कोटार कोयला जोटा मिले सेटा कोन हला ना गोंडवाना टाइम रो कोल गोंडवाना फॉर्मेशन दामोदर वैली इन द वेस्ट बंगाल. Niagara Falls is located between Niagara Falls is located between Lake Erie and Ontario. Lake Erie and Ontario. Niagara Falls located between Lake Erie and Ontario. तो ग्रेट लेक्स जो पांचटा रहिला ग्रेट लेक्स गोटे रहिला कोन लेक ह्यूरोन तार लेक ओंटारियो तार मिशिगन लेक मिशिगन तार रहिला लेक एरी एंड लेक सुपेरियर. सो ए लेक रहिला यूएसए और कनाडा बॉर्डर भीतर होची पांचटा ग्रेट लेक्स. तो तार नायग्रा वाटरफॉल्स लोकेटेड बिटवीन एरी एंड ओंटारियो लेक्स. Trade winds in the northern hemisphere. Trade winds in the northern hemisphere blows from. Trade winds in the northern hemisphere blows from. The trade winds in the northern hemisphere blow from. तो यार आंसर याद रे किछि भी नाही. तो आंसर यार किछि भी नाही. तो ए क्वेश्चन टा कोन इनवैलिड अछि. तो आमे जदी देखिबा कोन ना आमे देखिया कोन हला ना ट्रेड विंड कोन ब्लो करे ना सब ट्रॉपिकल. द विंड ब्लो फ्रॉम कोन ट्रेड विंड्स टा कोन करियो ब्लो फ्रॉम ट्रेड विंड्स टा कोन करियो ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम कोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रू कोडी ब्लो करे टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ऑल्सो कोन हला ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ता कोन करती ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे को जाय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे कोन को जायो ना नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे को जाय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रे कोन को जाय ना साउथ ईस्ट. साउदर्न हेमिस्फीयर रे को जाय साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. तो ये क्वेश्चन कोन आंसर टोटली नाही. तो इनवैलिड ये क्वेश्चन ना टोटली अछि. सो ट्रेड विंड कोन ब्लो करे ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ब्लो करता है. एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ता कोन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रे कोन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. Then is Bhakra Dam is constructed on the river. Bhakra Dam constructed on the river of Satluj. तो भाकरा डैम कोड कंस्ट्रक्ट करा जायतिला ना सतलेज रिवर इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश रे अछि सतलेज डैम. तो सेठी कोन होची ना गोविंद सागर रिजर्वायर होची. गोविंद सागर रिजर्वायर तो कोंती गोविंद सागर रिजर्वायर. गोविंद सागर रिजर्वायर होची जेडा से डैम रो जो वाटर बॉडी रखाई ता कोन कोंती ना गोविंद सागर रिजर्वायर. तो भाकरा डैम रे कोन तो सेडा. आ नंगल डैम तो कंस्ट्रक्टेड कराची लोअर स्ट्रीम रे पंजाब रे अछि भाकरा नंगल डैम कोन तो. Then the highest peak of Deccan Plateau which the highest peak of Deccan Plateau is Annaimudi. Highest peak of Deccan Plateau is Annaimudi. Deccan Plateau कोन हला ना लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया. Deccan Plateau कोन हला ना लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया. Deccan Plateau लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया. लार्जेस्ट प्लेट्यू
largest plateau in India ହେଲା Deccan Plateau and Deccan Plateau ର highest peak ହେଲା Anaimodi. Then asla which one of the following schedule of Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act. Anti-Defection Act ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 10 schedule ହେଇଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା 1985 ରେ. ତ 1985 ରେ ହେଇଥିଲା କଣ 52nd amendment act ରେ ହେଇଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ. ଏଟା କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 52nd amendment act 52nd amendment act ରେ ହେଇଥିଲା 1985 ରେ. तो राजीव गांधी को समय रे ହେଇଥିଲା 10th schedule of Indian Constitution Anti Defection Act ହେଇଥିଲା. तो जो दल बदल नीति को जो रोकिया पई कोन करा ହେଇଥିଲା ना एंटी डिफेक्शन एक्ट आस्तिला जण पॉलिटिशियन दिले कोन आयाराम गयाराम सेई टाइम रे गुड आस्तिला जण पॉलिटिशियन कोन करले ना गोटे दिन रे जण एमएलए थिले गोटे दिन रे दीटा दल ही चेंज करथिले. तो तापर पर कोन आसला ना ई कांसेप्ट आसला एंटी डिफेक्शन कांसेप्ट आसला राजीव गांधी समय रे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे आसला. Which one of the following articles of Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of union? So the article answer is article 257. The article 257 कहै कोन Now, the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of Union. So, described in Article 257. Then identify among the following the final authority to decide whether a bill is money bill or not. The final authority to decide the money bill is the Speaker of Lok Sabha. The Speaker of Lok Sabha is the final authority. से ही decide करे को bill टा money bill और money bill नुह. तो से and president कौन करिवे president आकु रोकी परिवे नहीं. President has no power to कौन return the bill. और राज्यसभा रा भी किछि पावर नहीं. राज्यसभा कौन करिवो ना राज्यसभा रे एते किछि रोल नहीं. राज्यसभा चाहिले पास हबो चाहिबे न चाहिबे किछि मैटर करे. लोकसभा ही पास करिवो. राज्यसभा 14 दिन भीतर कोन तो राज्यसभा केवल प्रस्ताव ही दे परिबो किछि चेंजेस करिया पे किंतु लोकसभा में एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट राज्यसभा हैज नो रोल और राज्यसभा को 14 दिन भीतर फेरिया को पड़िबो एंड द फाइनल अथॉरिटी इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट. Then identify which of the following can bring the resolution to remove the Vice President of India. The removal of Vice President कोडी resolution हबो. The answer is Rajya Sabha alone. राज्य सभा रे ही Vice President को गाड़िया पे resolution पास करा जे आज he is the chairperson of राज्य सभा. किंतु सेठी कोन करा जिवो ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे तांको पढा जिवो. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे कोन करा जिवो ना वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जिवो. Then identify in which of the following panchayat raj institution election in Odisha PRI election in Odisha reservation for women was raised to 50% of seats. तो ओडिसा रा को पंचायत इलेक्शन रे वुमेन मानक में रिजर्वेशन 50% को बढ़ाई दिया जायतिला. द आंसर इज सी 2012 PRI इलेक्शन. In which of the following cases did the Supreme Court give the ruling that Parliament did not have the power to destroy the basic structure or framework of the Constitution? So in which case the answer is Keswananda Bharati case. Keswananda Bharati versus the state of Kerala. तो सही केस रे कोन कहितले ना सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
Then I said the member of Constituent Assembly which enacted the Constitution of India were directly elected by the people, nominated by the Governor General, elected by the Legislative Assembly of various states, or nominated by Congress and Muslim League. The answer is C. Elected by the Legislative Assembly of various provinces. So the କିନ୍ତୁ ମୋର କରେକ୍ଟ ହବ ଯଦି କଣ ଲେଖିବା ନା they were partly elected and partly nominated ତ ଏଠି ଅପସନ ରେ ନାହିଁ କାରଣ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା ସେଠି କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୋମିନେଟ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଯଦି ଆମେ ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ହବ ନା partly elected and partly nominated ହବ partly nominated तो एठी ऑप्शन नथिला ऑप्शन तो नाही तो सेठी में लिखा जीव कोन ना इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस तापर कोन हो ना हु कमेंटेड द पावर द फर्स्ट लव ऑफ एवरी पॉलिटिशियन पावर इज द फर्स्ट लव ऑफ एवरी पॉलिटिशियन इज ए ट्रेचरस बिलव्ड like those of pretty women of little virtue or yours many and loyalty safety तो एडा किए कहथिले ना सुभाष सी कश्यप कहथिले सुभाष सी कश्यप the constitution of india borrowed the idea of directive principle तो dpsp कोड आसला ना directive principle of state policy borrowed from directive principle state policy borrowed from Ireland constitution Irish constitution borrowed करा जायतिला तो आयरलैंड कोन आइतला ना Irish constitution Irish constitution borrowed करा जायतिला DPSP Irish constitution borrowed करा जायतिला जोटा कि पार्ट 3 रे अछि DPSP सॉरी पार्ट 4 अछि 36 रु 51 पर्यंत अछि 30 आर्टिकल 36 टू 51 Second, the Indian Federation can be converted into unitary one. Indian Federation can be converted to unitary one during national emergency. National emergency रे कौन कर जाए ना प्रेसिडेंट का हाथ को सब पावर पड़े इसपे. The Indian Federation can be converted into unitary one during national emergency. Then the Constitution authorizes the President to establish interstate council. Constitution authorized कला President को interstate council to settle the dispute between various states and center. तो dispute कौन विभिन्न प्रकार state जो रहले से मान भीतर dispute settlement करिया पे कौन करागला ना interstate council गठन करागला states and two or more states and center dispute जोड़ा रहिबो सेटा कौन करा जिवो ना interstate council माध्यम रे सेटा settle करा जिवो तो जोटा कि कोन हला ना आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल हेला आर्टिकल 263 and can be created at any time if it seems to be precedent that public interest would be served by the establishment such council president establish कर परिबे it was set up in 1990 रे सेट अप कराइतला under the recommendation of सरकारिया कमिशन रेकमेंड करथिले तो इंटरस्टेट काउंसिल का अंडर करा जाए ना ये अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री अंडर करा जाए इंटरस्टेट काउंसिल then which one of the following fundamental right was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the constitution so answer is right to constitutional remedy that is article 32 right to constitutional remedy जदि कोनोसी प्रकार राइट वायलेंस हो that is reads
जदि कौनसी फंडामेंटल राइट वायोलेट हबो तो सेतिबाई को करा जीवो ना सुप्रीम कोर्ट नले हाई कोर्ट को जणे जाई परिबो रेट्स जोडा कहंती आर्टिकल 32 सेतिबाई कोन कहंती ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Then arrange the emergence of the following pressure group in Indian politics chronologically. Chronologically order रे arrange करा जिवो All India Trade Union Congress AITUC, Hind Mazdoor Sabha, All India Kisan Sabha, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI। तो chronologically arrange करबे हमें कोन ना All India Trade Union Congress के हेतला 1920 रे हेतला लाल लजपत राय हेतले 1920 रे हेतला एआईटीयूसी हिंद मजदूर सभा हेतला केबे 1948 रे हिंद मजदूर सभा तर ऑल इंडिया किसान सभा केबे हेतला ना 1936 रे ओडिशा प्रदेश जेबे गठन हेतला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन एंड ऑल इंडिया किसान सभा 1936 रे एंड फिक्की केबे करा जायतला ना 1927 रे। तो आंसर जदि हमें देखिबा कोन हबो ना फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 देन आसिला फिक्की आसीबो 1927 देन आसिला ऑल इंडिया किसान सभा देन हिंद मजदूर सभा 1948 रे। So next is one university student seeks to get elected to municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among other that he obtained the permission from the registrar of his university, he is the member of some political parties, his name figure in the voter list, he submits a declaration owing allegiance to the Constitution of India. The answer is his name figures in the voter list is most important thing. Then the salaries and allowances of judges of High Court are charged on the consolidated fund of state. Salaries and allowance charge of कोटू ना consolidated fund of respective state से जो state रा High Court रे विचारपति थिबे तो सही state रू ही charge करा जो से state रा but pension कोड charge करा जीवो pension will charge from consolidated fund of India consolidated fund of India pension will charge from consolidated fund of India किंतु सर्विस रे थिला बेले ताकर सैलरी अलाउंसेस कोड चार्ज करा जिवो ना consolidated fund of respective state. The computation of gender inequality index is made by considering the following disadvantages for women. तो को तार पैरामीटर कोन तार इंडिकेटर कोन कोन होइला को पैरामीटर को नै कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स टा कैलकुलेट करा जाय। तो आंसर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर मार्केट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कर इन द लेबर मार्केट तो सेगुडा को नै कोन करा जाय ना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स टा रिलीज करा जाय। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ education and empowerment and participation of women in the labor market a indicator who advocated providing urban amenities in rural area for alleviating poverty in India. तो rural area रे कोन होला ना शहर भलिया फैसिलिटी प्रोवाइड करा जिवो करा जाय कि कोन करा जिवो ना poverty alleviating करा जिवो और alleviating poverty in rural India. तो अर्बन एरिया रो फैसिलिटी प्रोवाइड करा जिवो रूरल एरिया रे करिकि कोन करा जिवो ना पॉवर्टी कमा जाय परिबो। एटा किए कहितले ना एपीजे अब्दुल कलाम ताकर गोटे बुक थिला कोन ना 2020 ए विजन ऑफ न्यू मिलेनियम तेजरे से डिस्क्राइब करथिले। Then which one of the following is used to compute total fertility rate? तो fertility rate केमिति कैलकुलेट करा जिवो ना number of live birth by women during her entire reproductive health. तो reproductive health रे entire reproductive health तो के रहउची केते तार गोटे एज लिमिट रहउची से एज भीतर जेती जने वुमेन रो कोन प्रोडक्टिव पावर थिबो तो सेटा ही रिप्रोडक्टिव पावर कोंती कोन तो से पीरियड टा कोंती फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट कोंती।
Then in India, a scheduled bank is one which entered in the second schedule of RBI Act रे कराइतला schedule and commercial bank कराइतला the RBI Act रो 1934 रे कराइतला schedule of second schedule of RBI Act 1934 रे then आसिला कोन the which 5-year plan in India for the first time emphasized sustained growth of software and information technology enabled service तो को 5-year plan रे कोन हला बेसिकली आईटी सेक्टर को फोकस करा गला आईटी सेक्टर को फोकस करा जायला को प्लान रे ना 10th 5-year plan रे करा जायला अटल बिहारी वाजपेयी को समय रे एबी वाजपेयी को समय रे कोन कराइतला ना सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कराइतला जेटा कि 2002 रु 2007 एबी वाजपेयी को समय रे स्टार्टिंग हेतला मनमोहन सिंह को टाइम रे एंड हेतला which one of the following is the definition of density of population the density of population ଗୋଟେ ଏରିଆ ରେ କଣ କରାଯିବ ନା average number of person living per square kilometer ତ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାର କିଲୋମିଟର ରେ ଯେତିକି ଲୋକ ରହୁଥିବେ average population ସେଇଟା କଣ କରାଯାଏ ନା ସେ ଏରିଆ ର density population density କୁହାଯାଇଥାଏ the integrated child development service ICDS scheme was introduced in India तो आईसीडीएस स्कीम जोटा कि अंगनवाड़ी हे जेबे आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस सर्विस हेतला सेटा केबे हेतला ना 1975 रे हेतला फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेटिंग वुमेन और नर्सिंग वुमेन तो जो माने कोन कले जे वुमेन माने प्रेग्नेंट अछंती आउ कोन हला जना चाइल्ड मान को प्रोवाइड करा होतला न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशनल हेल्थ इम्प्रूव कोन बढ़िया पई बा हेल्दी चिल्ड्रन मानक पई सेडा प्रक्रिया करा जायतला केटा ना आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रायतः 1975 रे हितला तो यार ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन को कोन करा जिवो ना इंप्रूव करिया पई एटा हेतला न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years पर्यंत and lay foundation for proper psychological physical and social development of child तो psychological physical social development करा जिवो reduce incidence of कोन ना mortality morbidity malnutrition and school dropout एगुडा कमिया पई हेतला and achieve effective coordination of policy and implementation among various department child development coordination बढ़िया पई करा हेतला promote child development and enhance capability of mother to look after the normal health and nutritional need of the child यार बेनिफिशियरी के दिले ना चिल्ड्रन थिले कोन 0 to 6 year पर्यंत प्रेग्नेंट वुमेन थिले एंड लैक्टेटिंग मदर जो माने कोन करथिले पिला मानन को खीर पान करा The ICDS scheme offers a package of 6 service दउतला गोटे ला सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन थिला and preschool and non formal education गोटे थिला 0 to 6 year पर्यंत एजुकेशन मिलुतला न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन थिला इम्यूनाइजेशन थिला हेल्थ चेकअप भी करा जाउतला एंड रिफरल सर्विस गुडा भी रहउतला तादे So which of the following is not a non-conventional source of energy? Non-conventional source of energy कोटा नुहे. The answer है कौन ना energy from burning animal dung. Energy from burning animal dung is a non-conventional source of energy. The energy generated from natural source like कौन ना wind, tides, तबर कौन ला solar, geothermal energy, geothermal heat, biomass एगुडा रहला कौन हमरो animal waste एगुडा non conventional energy दिला एगुडा सब non conventional एगुडा थिला हमर कोन non conventional source of energy थिला
तो इतिहास द फीचर्स कोन हला नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कोन थिला ना पॉल्यूशन फ्री रहउची एंड रिन्यूएबल एगुडा रिन्यू करि हबो एंड अब्यूटेंट होउची नेचुरली बहुत परमानेंट अवेलेबल होउची सोलर एनर्जी मिलउची टाइडल एनर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी जेडा कोन असरंती तो सरीबो नाही सेटा होची कोन नॉन कन्वेंशनल माने न्यूली यूज कर कन्वेंशनल माने कोन पारंपरिक भाबे यूज हे आसुची नॉन कन्वेंशनल माने कोन ना न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व होउची सोलर एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी विंड एनर्जी टाइड्स बायोमास एनर्जी हमें करूछु तो नुआ रिसोर्स जोडा आसुची से मारो पारंपरिक भाबे जोडा हेउ नथला तो नूतन भाबे जोडा यूज होउची पारंपरिक एनर्जी जोडा होउची सेटा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेउडा कोन होइला ना सोलर एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल वेव रु जोडा आसुची जनरेट होउची बायोमास एगुडा रहला हमरो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी भी आल्सो हो among the given option petroleum is not an example of non conventional energy resource. So industrial licensing has been abolished in India with the adoption of LPG program, liberalization, privatization, and globalization program. It is still valid for the following industry. तो को इंडस्ट्री पाई ना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबे भी वैलिड अछि तो सेगुडा हला कोन ना प्लाईवुड हैजार्डस केमिकल इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इक्विपमेंट एंड सिगार्स ए इंडस्ट्री पई कोन हला ना गवर्नमेंट थारु परमिशन दरकार इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग दरकार ए इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करिया पई गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार एबे डिफेंस इक्विपमेंट एबे मध्य कोन कराले ना प्राइवेटाइज हेलानी किंतु गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार होची केमिकल इंडस्ट्री हैजार्डस केमिकल जोडा रहला तो सेगुडा ए इंडस्ट्री गुडा एस्टैब्लिश करिया पे कोन हला ना गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार आफ्टर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म हला 1991 रिफॉर्म परे मध्य एगुडा एबे मध्य गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार एस्टैब्लिश करिया पे तो इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट ऑल टाइप्स ए इंडस्ट्री रहला स्पेसिफाइड हैजार्डस केमिकल तो को इंडस्ट्री रे दरकार गवर्नमेंट रो लाइसेंसिंग रहला इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस डिफेंस इक्विपमेंट तापर रहला specified hazardous chemical that is kono na hydrocyanic acid and its derivatives तापर phosphogene and its derivatives with isocyanates disisocyanate एगुडा रहला hydrocarbon तार रहला कोन ना इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव दरकार बनेया पई कोन दरकार ना गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार होती तार cigarette tobacco and manufactured tobacco substitutes the industry स्थापन करिया में गवर्नमेंट परमिशन दरकार तार अल्कोहलिक ड्रिंक इंडस्ट्री रहला तो पावर ऑफ रेगुलेशन ऑफ पोर्टेबल अल्कोहल हैव बीन वेस्टेड विथ स्टेट तो पावर ऑफ रेगुलेशन अल्कोहल रेगुलेशन में सेटा कोन ना स्टेट ऊपर से पावर टा रहउची स्टेट ही परमिशन दबो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोन हैला ना 1997 रे सुप्रीम कोर्ट कहले तापर फाइनेंशियल ईयर 2014 ने कोन कला ना गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट what would be called a defense equipment the initial validity of industrial licensing for all sector was extended to 3 years with a provision to grant 2 extension of for 2 years each so total time for validity industrial license for commercial production of defense equipment is 7 years defense equipment mai industrial license validity kebe 7 वर्ष mai रहला तो which one of the following is a type of foreign collaboration in India foreign collaboration का कोनती इंडिया रे foreign collaboration का कोनती ना joint participation between foreign firms and Indian government और foreign firm में जो joint collaboration हैला ता कोनती ना foreign collaboration तो what is meant by food price inflation का कोनती ना it is a sharper increase in the price of food articles relative of those of manufacturers and all other non-food articles so it is a sharper increase in the price of food articles relative of those of manufacturer and other non-food articles rochi seida konti food price inflation which one is the component of petrochemical industry ro component food plastics
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंपोनेंट कौन है ना प्लास्टिक पेट्रोलियम जो करा जाए तो सही टाइम कौन कौन तादरू बाहरी था डीजेल किरोसिन पेट्रोल plastics vaseline petroleum jelly various other substance gasoline many substances released during petroleum. Which of the following with which the call money market deals? Call money market deals with very short term fund. Short term fund रे कौन करे ना call money market deals करे. Call money market deals with very short term funds. तो call money market कौन है money lent for 1 day. तो 1 day पे जो money lent करा जाए ताको कौन थी ना call money is known as call money. Call money market is initially mainly deals with the day to day surplus fund of banks. Call money है. Money lent for more than 1 day ले कौन है more than 1 day less than 15 days is called notice money and more than 15 days hela kon 15 days or more hela interbank market is called term money. तो kon hela na 1 day जोटा hela kon money lent for 1 day is call money and money lent for more than 1 day but less than 15 days is notice money and money lent for 15 days or more is called term money. Sir, which one of the following is a source of non-tax revenue of Government of India? Government of India ର non-tax revenue कोटा interest receipts. Interest receipt is a non-tax revenue of Government of India. So non-tax revenue कौन है revenue receipt that are not generated by public taxing. तो public taxing रो जो money गुड़ा non-tax माने कौन tax रो जोटा collect होई न था सेटा होची कौन non-tax revenue. It's called non-tax revenue receipt. And this is the money that government earns कौन है government केमिति money earn करे ना profit dependent from parking profit through public enterprises. Public enterprises जो गोटा रहला PSU PSU रहला government profit earn कोची तो dividend से गुड़ा है कौन ना non tax revenue. The interest that government earns on the money lent by its internal and external borrower. Thus this revenue received can be in Indian rupees as well as foreign currency भी ହେଇପାରିବ या Indian rupee रे भी ହେଇପାରିବ. तो डिविडेंड जोटा कोन मन कर रशिया रे ऑयल कंपनी रे इंडिया इन्वेस्ट करथला तो से जो डिविडेंड जोटा पे करबे सेटा डॉलर रे पे करबो डॉलर न अलगा करेंसी फॉरेन करेंसी पे कर परिबो तो एमिति न जे सेटा इंडियन रुपी ही पे करबो तो मनी दैट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ इट्स फिस्कल सर्विस प्रिंटिंग ऑफ स्टैम्प मेटल प्रिंटिंग करेंसी प्रिंटिंग एटसेट्रा. Also money that the government earns through general service like irrigation, power distribution, insurance, banking service, community service, etc. This also make the part of government business. Also the money that is acquired by the government in form of penalty, fines, fees, etc. grant which are received by the government of India from its external sources. Also for the state government, this may not be grant, internal grant from central government. तारे कोन इन करेंट टाइम स्पेक्ट्रम ऑक्शन जोडा हमर कोन स्पेक्ट्रम होजी इंटरनेट स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम रिसेंटली हैज कंट्रीब्यूटेड लार्जली टू नॉन टैक्स रेवेन्यू सबडर मेजर कंट्रीब्यूशन आछि कोन स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो करा जाउची विभिन्न प्रकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर माने किनु चंदी ता गवर्नमेंट थ्रू. Also note that spectrum amount should have been capitalized but it is rather shown as non tax revenue. This shown in budget document as a single time charges are levied in the telecom player. Telecom player pay करछन. Furthermore, the tax revenue collected in India usually very high than the non-tax revenue. Non-tax revenue कौन? Tax revenue होची कौन? अधिका होची non-tax revenue. Government अधिका अर्न करछि tax revenue. Tax revenue कौन can be collected either from indirect or direct taxes. Indirect tax collected by intermediary from individual who ultimately bears the economic burden of the tax. These include VAT, sales tax, good and service tax, and such taxes. So while direct taxes is tax that is directly paid to the government of India by an Indian on whom this imposed, or thus income tax, wealth tax, gift tax, property tax, etc. are some of the examples of direct tax. And the majority of chunk of tax revenue in India collected through corporation tax through majority tax କରାଉଛି. Thus it is the direct tax contribute to the largest tax in India. तो गवर्नमेंट कोन करछि ना डायरेक्ट टैक्स सबठारो अधिक कोड गवर्नमेंट कलेक्ट करूछि ना कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट माने अधिक पे करछि डायरेक्ट टैक्स and this amount is much larger than collected under indirect taxes. That the abundance of species population within its habitat is called niche density.
niche density कौन the abundance of species population within its habitat is called niche density. Niche or ecological niche is specified part of habitat occupied by individual species which is limited by range of tolerance, range of movement and type of food and its availability, shelter type, predator and timing and activity. एटा होची कोन इकोलॉजिकल निचे तार गोटे लिमिटेशन रहउची तो हैबिटेट कोन हला ना सेवरल इकोलॉजिकल निचे हैबिटेट कोन हला ना निचेर समष्टि इकोलॉजिकल निचेर समष्टि होची हैबिटेट द हैबिटेट निचे इज पार्ट ऑफ हैबिटेट and support a number of species many species गोटे habitat रे मिल परिबे and ecological niche is used by a single species ecological species रे कोन गोटे single species रहि परिबो कि habitat रे कोन करबो ना number of species as habitat is the collection of several ecological niches or collection of niches two or more species cannot use the same niche despite having mutualistic association. In a food chain of a grassland ecosystem the top consumers are in a food chain of grassland ecosystem the top consumers are carnivores. Top consumer are carnivores. 73 हला कोन टॉप कंज्यूमर के हेबे जदि ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे कोन होबो ना कार्निवोर्स ही टॉप कंज्यूमर होबो. herbivores बैक्टीरिया पर कार्निवोर्स ही टॉप कंज्यूमर होबो. carnivores bacteria and either carnivores or herbivores. The answer is carnivores. How is oxygen cycle affected? The human activities, running automobiles, consumption of fossil fuels. Choose the correct code. The oxygen cycle केमिति affected होई थाए तो all are correct 1 2 3 ही हो all are तो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा भी अफेक्ट होता है रनिंग ऑटोमोबाइल्स द्वारा भी पोल्यूशन रिलीज हुए फॉसिल फ्यूल भी पोल्यूशन रिलीज हुए तो ऑक्सीजन साइकिल इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस. The project Tiger was launched by the recommendation of Indian Board of Wildlife recommendation रे तो project Tiger launch केबे हितला ना 1973 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कराइतला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे हितला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देन लॉन्च हला कोन ना प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर हितला कोन टाइगर मानकर कंजर्वेशन पे कराइतला प्रोजेक्ट टाइगर 1973 रे हितला जोटा कि एनटीसीए द्वारा परिचालना होची एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए द्वारा होची मिनिस्ट्री ऑफ कोन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट होचन तार कोन चेयरमैन होचन एनटीसीए रो एनटीसीए रे कराइतला कोन ना टाइगर रिजर्व जति रहबो से रुगडा प्रोटेक्शन करबो एनटीसीए अंडर से माने जाउची एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर सेति पई एनटीसीए क्रिएट कराइतला प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हेतला केबे 1973 टाइगर सेंसस मध्ये कंडक्ट करा जाउची प्रति 2-3 वर्ष रे तो इंडिया रो ऑप्शन कोन सबटारु हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइगर इन वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया एनटीसीए. Then second, recently for the first time in our country, which of the following state has declared a particular butterfly as the state butterfly? The state butterfly को state declare करची 76 लेला को state declare करची ना से महाराष्ट्र का करची state butterfly ना blue mormon is the state butterfly. blue mormon is the state butterfly of Maharashtra. Then if you walk through the countrywide, you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses. Which of the following is the such birds? तो गाँ रे देखो कैटल फैटल जे मन जदी बिल रे घास भास चलुते ताको ऊपर कोन करछंती ना विभिन्न प्रकार बार्ड माने ताको ऊपर पिठ रे बसतांती तो सही बार्ड को माने ले से बार्ड गुडा तो कॉमन माइना जोडा कोन कजळपाती कोंती कजळपाती से माने को पिठ रे बसता है बसी के तंगर टिंको बिंको जोडा थाए जो कोको गुडा थाने सेगुडा खाइ थाए गाय रस देह रे जोडा थाए कजळपाती जमती जोडा कॉमन माइना कोंती तो
तो व्हाट इज बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कौन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कौन ना कि द एटी अछि कोन द अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर द अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन द टोटल अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट इन वाटर तो आंसर एथरे देखले तो पर्टिकुलरली कौन सी नाही किंतु 78 रो एटा क्वेश्चन टा इनवैलिड अछि क्वेश्चन रे किंतु 78 टा बी देखले करेक्ट के लागुची तो मो अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन तो सेटा देखले कोन बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट आंसर होची ए चारटा भितर देखले एटा मोर करेक्ट होची किंतु एटा क्वेश्चन टा इनवैलिड अछि तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोन हला ना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन ए सैंपल ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफिक टेंपरेचर एंड टाइम फ्रेम तो सेति पय कोन होची कोन ना बी ऑप्शन बी देखले टिके करेक्ट लागुची रेस्ट 3 थारु तो इट इज कोन हला बायोलॉजिकल कोन ना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन ए सैंपल ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफिक टेंपरेचर एंड टाइम फ्रेम दरकार गोटे मिनिमम टेंपरेचर गोटे टाइम फ्रेम भीतर कोन करबे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोन करबे ना ब्रेक डाउन करबे ऑर्गेनिक मटेरियल को so in simple word the amount of oxygen needed by biological organisms such as bacteria in a water sample for breakdown of organic matter by oxidation say process ta कहंती oxidation कहंती the process is called biological oxygen demand. The recent studies indicate that two of the most dangerous components of air pollution around major cities in the developed nations are तो सिटी मानकर तो मोस्ट पॉल्यूटेंट मटेरियल कोन पॉल्यूटेंट्स रो देखा जाउ जोटा सेटा कोन तेरा होची कोन फाइन पार्टिकल्स एंड सल्फर पॉल्यूशन फाइन पार्टिकल जोड़ा कोन रहला ना एरोसोल जोड़ा रहला और फाइन पार्टिकल रहला PM 2.5 एंड PM 2.5 PM 2.5 and PM 10 सेटा रहला एंड सल्फर पॉल्यूशन रहला सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जोड़ा रहला सेटा होची मेजर देखा जाउची इंडियन सिटी जोटा डेवलप्ड नेशन जोड़ा रहले से मानक देखा जाउची PM 2.5 PM 10 एंड सल्फर पॉल्यूशन मेजर पॉल्यूशन दी जात that compared to 50 years ago the thinning of ozone layer has produced dramatic increase in case of तो ओजन लेयर रे जो हमर जो ओजन होल टा जोटा हेतला ता द्वारा कोन होची ना ओजन लेयर हमर कोन करना प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ता कोनती सेठी कोन कर जे सूर्य के ठार जोटा अल्ट्रा वायलेट रे आस्ता सेटा कोन अवशोषित होइताय ओजन लेयर रे O3 किंतु सेटा कोन होची ना ब्रेकडाउन कोन होची ना मेन ब्रेकडाउन के करूची ना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा मेजरली अफेक्टेड होची हमर ओजन लेयर ते कोन करची ना क्लोरीन गैस जाई कोन करची ओजन से रिएक्शन करकी कोन करची ना तो ओजन रो जो एटम ता अछि ताको ब्रेक डाउन कर दोची सेटा क्लोरीन ऑक्साइड फॉर्म होची तारे क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गोटे फॉर्म होची तो ता द्वारा कोन कराउची ना सूर्यकर जो अल्ट्रा वायलेट रे जति पृथ्वी पृष्ठ को आसी की मनुष्य रो कोन करूची को डिजीज होची ता द्वारा ना होची तमर कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर होची ऑप्शन 3 and 4 the cataracts and skin cancer produce होची अल्ट्रावायलेट रे मनुष्य कोन अफेक्ट करछि ना cataracts and skin cancer the ozone layer depletion causes increased UV radiation level at the earth surface which damaging increased UV radiation करछि the damaging human health negative effect including certain type of skin cancer eye cataracts आखि ऊपर प्रभाव पडुछि and immune deficiency disorder immunity कमी जाउछि मनुष्य Then asla which of the following can be found as pollutants in drinking waters in some part of India? तो इंडिया रे जो ड्रिंकिंग वाटर होची को pollutants मिलुची arsenic, sorbitol, fluoride, formaldehyde and uranium. तो या भीतर को pollutants मिलुची हमरो contamination होची ड्रिंकिंग वाटर contamination जोटा होची भूपृष्ठर तो सेइतरे को pollutants गुडा मिलुची हमरो तो आंसर हो कोन ना arsenic मिलुची देन fluoride मिलुची एंड 5 मिलुची तो यूरेनियम मिलुची एट 1 3 5 हो आर्सेनिक पॉल्यूशन हमर वेस्ट बेंगल रो होची मेजरली वेस्ट बेंगल रो देखो आर्सेनिक पॉल्यूशन यूरेनियम हमर देखते झारखंड रो जदुगुडा देखाला कोन यूरेनियम कंटामिनेशन होई कि विभिन्न प्रकार डिजीज हेगला से माने कोन हेले ना डिसेबिलिटी देखाला से मानकर विभिन्न प्रकार किडनी डिजीज मध्ये देखा जाउची वाटर कंटामिनेशन होवा द्वारा तो मेनली कोन मिलुची ना आर्सेनिक फ्लोराइड एंड यूरेनियम कंटामिनेशन देखा जाउची तो
type of carbohydrate sorbitol kon hela gote type of carbohydrate called sugar alcohol or polyol. So sorbitol contain kon amount of 1/3 of pure calories than sugar and 60% as sweet as sorbitol occurs naturally variety of berries and fruits se dekha jauti tar formaldehyde kon coating re use kara jauti formaldehyde ki. Then cloning is an experimental technique used to produce morphologically identical organism, genetically identical organism. The answer is both A and B. Cloning करा जाउची कोन पे both A and B, morphological identical organism and genetically identical organism. Then aerosol is the heterogeneous mixture of gas and solid and gas and liquid. Both are correct. C and D are correct. Aerosol है कोन ना mixture of gas liquid and gas solid. Aerosol. The which of the following is not a magnetic material? Magnetic material कोटा iron, cobalt, lead, nickel. तो magnetic material हमर तीनटा अछि गोटा iron, cobalt, nickel. ये तीनटा जाक होची magnetic material. Lead is not a magnetic material. So the formula for conversion of temperature from Kelvin to Celsius is T degree Celsius is equal to Tk minus 273. तो सेल्सियस रु जदी करा जीवो सेल्सियस रु केल्विन करा जीवो जदी कोन हबो ना एटा हबो Tk plus 273 से जति सेल्सियस तारे 270 ऐड करा जीवो और सेल्सियस को जदी कोन करा जीवो ना केल्विन टू सेल्सियस कोन करा जीवो ता थेदरु minus 273 हबो और सेल्सियस रु केल्विन हेले सेदरे plus 273 हबो केल्विन होजी 273 रु 373 Celsius of 0 to 100 degrees Celsius. So which of the following is not correct? Comets are a member of solar system. They have a bright head and long tail. Tail is always directed towards the sun. They revolve around the sun is highly elliptical orbit. The answer is the tail is always directed towards the sun. The following not correct. Tail is not always directed towards the sun. The answer is C. The image formed by a plane mirror is प्लेन मिरर रे को इमेज टा फॉर्म होता है प्लेन मिरर रे वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट तो ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज एंड बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लैट मिरर इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज एंड द इमेज इज upright. A child eats food rich in carbohydrates and avoid protein in the diet. Which type of nutritional deficiency will affect the child? तो कोन हला ना कार्बोहाइड्रेट बॉडी रो अधिक परिमाण रहउची किंतु प्रोटीन रो डेफिशिएंसी रहउची ता डाइट रे प्रोटीन नाही तो ता को डिजीज होबो क्वासिओर्कर डिजीज होबो क्वासिओर्कर तो प्रोटीन डेफिशिएंसी रे को डिजीज होइता क्वासिओर्कर इज द malnutrition produced by severally inadequate amount of protein थिले कोन हुए ना क्वासिओर्कर तो निक्टालोपिया कोन पय होइता ना कैरेक्टर बाय abnormal inability to see dim light अंधारी लाइट देखा जीवो नाही तो निक्टालोपिया जोडा कोन कोन अंधार कोना जोडा कोनती विटामिन ए रो डेफिशिएंसी हेले निक्टालोपिया होइता है डायबिटीज कोन हला डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिजीज एसोसिएटेड विथ abnormal high level of glucose थाए इंसुलिन न थाए बॉडी रे इंसुलिन तयारी हेबे न थाए पैनक्रियाज रे न थाए पैनक्रियाज कोन करे ना इंसुलिन तयारी करबे न थाए तो सेति कोन हला ना इंसुलिन डेफिशिएंसी थिबो एंड ग्लूकोज थिबो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज थिबो इंसुलिन बॉडी रे प्रोड्यूस हेइ परमथु एटा हले डायबिटीज रहता है पर एनीमिया कोन होबो ना जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम क्यों कोन ना क्रोमोसोम 21 दैट इज कॉल्ड अ ट्राइसोमी सेति में एनीमिया आइता है when antibody is extracted from other animals are injected into your body what kind of immunity do you gain तो एंटीबॉडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल बॉडी रो एक्सट्रैक्ट करा जाई कोन करा जिवो ना ह्यूमन बॉडी रे जदी इंजेक्ट करा जिवो तो सेतिर कोन करा जिवो तो आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक को जिवो आर्टिफिशियली तो गोटे जगह रो अलग जगह रो इंजेक्ट करा जि माने कोन आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही को जिवो तक तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन pancreas is both exocrine and endocrine pancreas is both exocrine and endocrine gland because the endocrine gland system consists of composed of ductless gland and endocrine gland is secret hormone से secret hormone secret करता है and ductless gland
Gland that have ducts ତାକୁ କହନ୍ତି exocrine gland କହନ୍ତି, and the secretion of exocrine gland reach their target by traveling through a duct or tube କହନ୍ତି। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रे कोन डक्टलेस ग्लैंड डक्ट न थाए, किंतु एक्सोक्राइन रे कोन रहउची ना डक्ट रहउची। तो एंडोक्राइन इज डक्टलेस बट एक्सोक्राइन इज डक्ट हैव डक्ट्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कोन करे सीक्रेट हार्मोन बट द सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड रीच देयर टारगेट बाय ट्रैवलिंग थ्रू ए डक्ट। But the mixed gland is the gland that produce endocrine and exocrine secretion. The hormone thibo and duct bhi thibo. The pancreas is an example of gland because mixed gland because it secretes hormone secrete करे and circulation like insulin and glucagon ही थाए। But it also release an exocrine secretion. Exocrine secretion भी होता है that is pancreatic juice तक होती। Whereas thyroid, pituitary, adrenal glands not having both endocrine and exocrine system. अलगा तीन टा रहला सेरा करण नहीं। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to be escape the form of bubble. Once we release the pressure of the bulbs, water gets filled in the dropper. The rise of water in dropper is due to the water कौन में जब हम प्रेस करिबा सेठी कोन हबो ना वाटर एब्जॉर्ब हे जो ट्यूब भितरु सेटा पे एटा कोन में मेन रीजन कोन तार मेन रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure is the main reason, which is not a greenhouse gas. Greenhouse gas कोटा nitrogen is not a greenhouse gas। बाकी जोटा रहले CH4 N2O कार्बन डाइऑक्साइड ये होचंदी सब ग्रीनहाउस गैस। तो ग्रीनहाउस गैस आगो को गुडा रहले ना HFC रहला CFC PFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन sulfur hexafluoride SF6 ozone tropospheric ozone is a greenhouse gas and H2O माने water vapor रहला most abundant greenhouse gas is water vapor। That which of the following is not linked to imbalanced diet? Imbalanced diet सहित total link नुहे। तो answer is thalassemia। Thalassemia is not linked to imbalanced diet। There batteries electric CFL chlorofluorescent carbon sorry एटा होची compact fluorescent light जोटा CFL कहंदी ताकू electric CFL fluorescent light bulb। CFL bulbs and electronic items are recyclable and hazardous weight। एटा recyclable करा जिवो किंतु एटा बहुत hazardous कारण CFL bulb रे कोन रहउची मर्क्यूरी रहउची बैटरीज रे रहउची कोन जिंक रहउची एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम रे विभिन्न प्रकार कोन एलिमेंट्स रहउची मेटल विभिन्न प्रकार मेटल रहउची जोगुडा की कोन करची ना ई वेस्ट पोल्यूशन होची वाटर पोल्यूशन होची सॉइल पोल्यूशन होची ता द्वारा वाटर कंटामिनेशन भी होची। तो सेटा कोन हबो ना रिसाइक्लेबल एंड hazardous वेस्ट ता कोनती रिसाइकल हो पारे बट hazardous। Which of the following is not correct? Exercise does not help in managing psychological discomfort. Exercise increases cardiorespiratory fitness. Exercise reduces risk of diabetes. Exercise helps in managing bone health। तो which of the following is not correct? तो कोटा correct नो the answer होगा कौन exercise does not help in managing psychological discomfort। psychologically जब जन ill थिबो तो exercise कले केमिति सुधार आसीबोटा। So the blue color of water in the sea is due to absorption of color except blue by water molecule। 96 about D absorption of water other color except blue color सब कलर absorb होइतो किंतु blue color absorb होई पारे नै सेति पई देखा जाय। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI जो कोनथि MRI स्कैन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI used in medical diagnosis to obtain images of internal organs of the body। This is primarily possible due to ions and motion along our nerve cell generated by magnetic field। MRI scan कौन करछे ना आयन टा जनरेट हुए तो along the nerve of cells generate magnetic field। This powerful magnet which produces a strong magnetic field
expand to patent and it forces proton in the body. The field exposed to the patient and it forces proton in the body to align with that field, and its alignment of proton helps us imaging the anatomy of body. तो कौन है ना पावरफुल मैग्नेट कौन कर प्रोड्यूस करबो कौन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज टू हबो कौन पेशेंट रो बॉडी को देन कौन हबो एंड इट फोर्सेस प्रोटॉन प्रोटॉन को हमरो बॉडी फोर्सेस करियो बॉडी सारा स्प्रेड हो जिवो एंड इज अलाइनमेंट ऑफ प्रोटॉन हेल्प अस कौन इमेज द एनाटॉमी ऑफ बॉडी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायटरी डेफिशिएंसी डिजीज डायटरी डेफिशिएंसी जो को डिजीज होई थाए तो नाइट ब्लाइंडनेस नाइट द निक्टालोपिया कोन कोन विटामिन ए जो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो तो कोन हो विटामिन ए रो कोन होय थाए विटामिन ए डेफिशिएंसी ले कोन नाइट ब्लाइंडनेस होय थाए अंधार कोना जाउ कोन. टंगस्टन इज यूज्ड एज a filament in electric bulb because have high resistance high melting point high conductance. The answer is have high resistance and high melting point. तो सेति पय आको यूज करा जाय थाए इलेक्ट्रिक बल्ब रे टंगस्टन. Where does computer add and compare data? कंप्यूटर डाटा कोडी ऐड करे एंड कंपेयर करे डाटा कोडी ना सीपीयू चिप रे. तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मध्ये कोन सीपीयू चिप को. तो हमें जो 94 जो क्वेश्चन टा देखिले 94 क्वेश्चन देखिले बैटरी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एटा तो आंसर देछि इनवैलिड किंतु रिसाइक्लेबल एंड जाडस हे परबे आंसर. तो क्लास टा कंप्लीट हैला आज. तो सीपीयू होउची कोन ना इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म और एग्जीक्यूट कोन ऑल एक्शंस और प्रोग्राम. सीपीयू इज वेरी एफिशिएंट कैलकुलेटर एटा हम देखिले 100 रो एक्सप्लेनेशन दा रहउची एटा ना. हार्ड डिस्क ड्राइव कोन हैला इज एन इलेक्ट्रो mechanical data storage device that stores and retrieve digital data using magnetic storage and one of the more rigid rapidly rotating platforms. and monitor कहला कोन इन आउटपुट डिवाइस कोन डिस्प्ले करंती जहा हमें कोन डाटा इनपुट करंती कोन इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट जोटा देता डिस्प्ले करता है होची मॉनिटर. तो आज क्लास सइला. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द क्लास and give comment. So thank you.